we discussed about types of semiconductors. Two types, extremely pure semiconductors are called intrinsic semiconductors. Atoms in intrinsic type semiconductors have their octet complete. All electrons they have in their octet. Hence, valence band is completely filled and conduction band is completely empty. So, at room temperature, even due to thermal agitation, few electron hole pairs are created. Intrinsic type semiconductors are not useful for electric conductivity. So in intrinsic type semiconductors, number of holes is same as number of electrons. To overcome the difficulty of intrinsic type semiconductors and to make them more electrical conductive, we use the method of doping, and doped semiconductors are called extrinsic semiconductors. In extrinsic semiconductors, electric conductivity is considerable. With proper electric field externally applied, they can use as a device, and hence you will talk further with extrinsic type. In extrinsic type we get two types, p type extrinsic semiconductor in which majority charge carriers are holes. So due to thermal agitation in p type already few electron hole pairs are created. In addition, due to doping of trivalent impurity to pure semiconductor, we get more numbers of holes available. So majority charge carriers are hole, and the impurity is not donating electron. It creates holes, and thus it's called p type. The other is n type. In this case, to pure intrinsic semiconductor, pentavalent impurity is added. It donates electron. So pentavalent impurity is also called donor impurity. And the semiconductor structure is called doped semiconductor. So in N type, donor impurity gives number of more electrons to intrinsic type semiconductor. Electrons are majority charge carriers. We get current due to holes also, because due to thermal agitations, due to production of electron hole pair, holes are available in conduction band. And in that case, the majority charge carriers are electrons. So both these are extrinsic type EX, and pure semiconductor, which is very poor in electric conductivity at room temperature, is called intrinsic type. So we studied the mechanism, the behavior, the formation of independent p-type, n-type and intrinsic type semiconductors till now. Today we will proceed further to study when p-type is connected with n-type, when both are diffused together. When both are diffused, we get formation of PN junction in the contact region between the two. So today we will discuss about PN junction, its formation and its property, which is point number 14.6 on page 249 of the textbook.
So I am discussing about point 14.6, page number 249 of the textbook, in which we will study about PN junction, its formation and its properties when P-type semiconductor is joined with N-type semiconductor. So PN junction. This is today's topic of discussion. So first thing what we will do, we will actually P-type independently and N-type independently are electrically neutral. Even they are doped. Suppose this is intrinsic semiconductor, pure semiconductor. उसका हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. When you add impurity of third group element or fifth group element, impurity atoms added are also electrically neutral. So if you take p type chip or you take n type chip, independently they are electrically neutral. P type has majority charge carrier holes, majority charge carriers electrons, even though both these semiconductors are electrically neutral. They are rich in hole and N type is rich in electron, but still each is electrically neutral. So what happens when P is connected with N? It is called fusion. When P type and N type fused together. Suppose this is P region and this is N region. When fused together, what will happen? In the contact between them, will get junction formation, and this is called PN junction. Immediately when they are fused together, suppose this is N type and this is P type. In P type you get holes in more number and in N type you get electrons in more number. ज्यादा नंबर से मिलते हैं. फ्यूज किया तो इमीडिएटली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N region cross the junction, diffuse through the junction and enter P region. P region में होल्स अवेलेबल है. होल्स ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स जब भी डिफ्यूज हो जाते हैं तो ये N रीजन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता है. इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. नाउ नियर दिस जंक्शन we will get accumulation of positive ions. In N-type region, I again explain, in N-type, we have plenty of electrons for conduction. When are combined together, rich region in electron diffuse or cross the junction and enter P region. तो इलेक्ट्रॉन N टाइप के कम हो जाते हैं. इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो एटम है वो पॉजिटिव आयन तैयार हो जाते हैं एंड यू गेट फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, एक्यूमुलेशन, एकत्रीकरण, ग्रुप तैयार होता है इन N टाइप नियर दिस जंक्शन. ये जो जंक्शन तैयार होता है ना उसमें पॉजिटिव आयंस विच आर कॉल्ड डोनर, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना तो डोनर आयंस बोलते हैं. एट द सेम टाइम these holes they also will try to cross the junction and try to recombine with electrons in P region. तो जब ये होल्स क्रॉस करते हैं तभी ये जो एटम्स है होल्स क्रॉस किया, पॉजिटिव उसका चार्ज कम हो गया, सो इधर आयंस तैयार हो जाते हैं. नेगेटिव टाइप. नेगेटिव मीन्स व्हाट? दे हैव deficiency of
positive charge, and positive ions means they have deficiency of electron. So you get accumulation of ions, positive type of ions in A region, negative ions in P region near this junction, and this region is totally depleted of the charges. उसमें ये रीजन में एक भी चार्ज होल भी नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिलेगा. The region is completely depleted of the charges and hence it's called depletion layer. उसको डिप्लेशन लेयर नहीं तो उसको डिप्लेशन रीजन बोलते हैं. 1 minute. This is called depletion. I am trying to focus the camera. So depletion of charges you will observe in this region and it's called depletion region. In addition, these positive ions create positive charge towards N type near the junction only and negative charge accumulation opposite side in P region and you get इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाता है अपने आप. दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल. विथ द जंक्शन इटसेल्फ क्रिएट्स बैरियर पोटेंशियल अक्रॉस इट. सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. एन टाइप में पॉजिटिव मिलेगा एक्यूमुलेशन, पी टाइप में होल्स कम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन होने के बाद, तो उधर नेगेटिव आयंस का एक्यूमुलेशन मिलता है एंड इट क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज नियर द जंक्शन इन पी टाइप रीजन. दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल. सो व्हेनेवर पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, immediately, even in the absence of external any electric source, it creates barrier potential across it and we get formation of depletion layer within it. तो पीएन जंक्शन जब भी तैयार हो जाता है तभी हम लोगों को दो आइडेंटिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल. बाय डिफॉल्ट कभी भी आप लोग पीएन जंक्शन तैयार करो, वो जंक्शन को ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिल ही जाती है. सो क्या होता है, इफ पॉजिटिव ओवर हियर, नेगेटिव ओवर हियर, अभी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर का है, वो अगर पी रीजन में जाना चाहता है, ही हैज टू क्रॉस दिस बैरियर पोटेंशियल. जो बैरियर पोटेंशियल तैयार हुआ है ना, आयंस की जो वॉल तैयार हुई है, इट ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स. इधर तो मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन्स होल कंबाइन हो गया, लेकिन जो अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, नहीं तो होल्स अवेलेबल है, दे आर नॉट एबल टू इजीली क्रॉस द जंक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन वॉल. बैरियर पोटेंशियल के हिसाब में वो आयंस है ना, वो फर्दर मोशन क्या करता है, अवॉइड करता है. सो यू गेट फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. सिमिलरली फ्यू होल्स प्रेजेंट इन एन टाइप एंड पी टाइप रिस्पेक्टिवली. बैरियर पोटेंशियल एक बार तैयार हो गया तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्स बच गए हैं वो वैसे ही रह जाते हैं. They are not able to overcome this barrier potential and cross the junction. Few electrons, few holes remain as it is in N type and P type region. होता ही है. So this is called PN junction. तो PN junction मैंने क्या बोला? It has two characteristics. One,
depletion layer. Second, its own electric field, which is called barrier potential. And this barrier potential opposes further flow of charges through the junction. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है. When you want this PN junction to conduct electricity, अभी ये PN junction तैयार हो गया, अभी मेरे को उसका उपयोग करना है. आई विल यूज दिस एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. उसका मेरे को डिवाइस जैसा यूज करना है, यानी कि आई वॉन्ट टू पास करंट थ्रू दिस. अभी करंट तो नहीं मिलेगा. सो एट नॉर्मल कंडीशन दिस इज कॉल्ड अनबायस्ड. At NTP, immediately after the formation of PN junction, it is not conducting and it's said to be in unbiased mode. जब भी तैयार होगा हम लोगों को वो अनबायस्ड मोड ही मिलता है, even though few electrons and holes are still left in N and P region respectively. तो अभी जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स है उसका अगर मोशन हम लोग चाहते हैं, करंट थ्रू चाहते हैं, तो ये बैरियर पोटेंशियल हम लोगों को ओवरकम करना पड़ेगा बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल मीन्स, सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव थ्रू द डिवाइस एंड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, and then only PN junction can be used as a device. So biasing proper होना चाहिए. जो तैयार होता है वो टोटली अनबायस्ड है. इफ यू टेक सिलिकॉन प्योर क्रिस्टल चिप, एक स्ट्रिप लेनी है सिलिकॉन की. जनरली क्या किया जाता है, जब पीएन जंक्शन तैयार किए जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, प्योर इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की चिप लेते हैं. सिलिकॉन ले लो, नहीं तो जर्मेनियम ले लो, एंड विथ प्रॉपर कंडीशन दे chip is doped with trivalent and pentavalent impurity. ध्यान से with cautious you have to create two regions in the same chip. Formation of PN junction ऐसे फ्यूज नहीं किए जाते. जनरली टेक्निकली इंट्रिंसिक में डोपिंग किया जाता है, लेकिन while doping you should be very careful. For silicon, barrier potential created is nearby 0.3 to 0.4 volts. और जर्मेनियम लिया तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू नियर बाय 0.6 टू 0.9 मिलती है. जर्मेनियम लिया तो, सो आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्लेशन रीजन. आई हैव टॉक्ड अबाउट बेस्ड ऑन फिगर 14.17. 14.17 की फिगर देखो, पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लेशन लेयर. डिप्लेशन लेयर में टुवर्ड्स एन टाइप accumulation of positive ions, towards p type in depletion layer, ये तो जंक्शन हो गया, you get accumulation of negative ions and hence barrier potential is for with higher potential in n region as compared to p region. इसकी पोटेंशियल की वैल्यू n रीजन से ज्यादा होती है. But even further flow distract होता है and hence it's called in unbiased state. So field developed across the junction is shown in figure 14.18. 14.18 देखो, उसमें उन लोगों ने न्यूट्रल एन रीजन, उसमें पॉजिटिव आयन दिखाए हैं, न्यूट्रल पी रीजन उसमें निगेटिव आयन दिखे हैं. टुवर्ड्स एन टाइप यू ऑलवेज गेट पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स पी टाइप यू ऑलवेज गेट निगेटिव. बुक में इधर एन डाला है, इधर पी डाला है. मैंने डायग्राम निकालते समय लेफ्ट साइड पी डाला है, इसलिए इधर निगेटिव आया, और राइट साइड एन डाला है, इसलिए ये बाजू मेरी पॉजिटिव आ गई. डिपेंडिंग ऑन द प्लेस shown in the diagram, you have to show barrier potential sign. N type में पॉजिटिव पोटेंशियल चाहिए,
उतना ध्यान रखना है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज का जो बचे हुए हैं वो एन में दिखाइए और होल्स है वो कहाँ दिखाना है, पी टाइप में दिखाना है। सो दिस इज अनबायस्ड। At room temperature, PN junction form is always unbiased. It has its own depletion layer and it has its own barrier potential, which resists further flow of charges through the junction. अभी मेरे को क्या करना है, सपोज ये एन रीजन है, ये पी रीजन है, ऐसे बुक में जैसा दिखाया है वो वैसा मैं दिखाती हूँ। इधर हायर पोटेंशियल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल इन पी टाइप नियर दिस जंक्शन। इधर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, इधर अवेलेबल होल्स है, लेकिन वो अनबायस है। ये पूरा डिप्लेशन लेयर हो गया। डिप्लेशन लेयर में ही आप लोगों को बैरियर पोटेंशियल मिलता है। So what happens? These electrons are unable to cross the junction to recombine with the left holes in p type. अभी मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने हैं, अभी नहीं हो सकते, लेकिन अभी मेरे को उसमें कंडक्शन चाहिए, तो उसको प्रॉपर बायसिंग करना पड़ता है। बायसिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, फॉरवर्ड बायसिंग when through junction current can flow, and the other is called reverse biasing. In that case, these holes are moved away from the depletion layer as well as these electrons are moved away from the depletion region. ये क्रॉस नहीं हो सकता है, इसलिए it will not carry any current. It will behave as open switch. ओपन स्विच जैसा। तो क्या करना पड़ेंगे, होल्स है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे बैरियर पोटेंशियल से अलग। तो ये अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स के पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं एंड एक्सटर्नल सोर्स के निगेटिव को क्या कनेक्ट करेंगे, उल्टा, एन टाइप पॉजिटिव को, पी टाइप निगेटिव को। तो क्या होगा, these electrons will get attracted towards positive potential and will be drawn away from this depletion layer and you will not get any current through it. So this is called reverse biasing. Positive is connected to negative of external source and n type is connected to positive of external source. Then both charge carriers will get drawn away from the depletion layer and that time this junction will not conduct any current. That is called reverse biasing. लीकेज करंट तो मिलता ही है, few electron hole pair will combine and very small in micro ampere में आप लोगों को थोड़ा तो करंट मिलेगा but not in good conducting state. अदरवाइज इफ उल्टा किया आप लोगों ने, एक्सटर्नल सोर्स तो लगाना ही पड़ेगा बायसिंग के लिए, बिकॉज व्हेन पीएन जंक्शन इटसेल्फ इज ऑलवेज इज इन अनबायस्ड स्टेट। तो ये बैरियर पोटेंशियल जब तक ओवरकम नहीं करते ना, तब तक इलेक्ट्रॉन होल क्रॉस नहीं कर सकेंगे जंक्शन। सो इफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स N is connected to positive and P is connected to negative, तो रिवर्स बायस हो गया। अभी क्या करते हैं, we will apply positive external source to P region and negative we will connect to N region। तो अभी क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा। दैट टाइम this hole or electron will receive energy, will gain energy and they will cross the junction. After crossing the junction, electrons will move in the complete circuit because this positive side में वो क्या हो जाएंगे, attract हो जाएंगे। So P to positive and N to negative, then current will flow through it. इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो इलेक्ट्रॉन करंट है। कन्वेंशनली हम लोग कैसे दिखाते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन। सो दिस इज मोशन ऑफ होल्स व्हाइल दिस इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
So when P is connected to positive of external source, N region connected to negative of external source, current passes or the junction conducts, and it is called फॉरवर्ड बायस मोड. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, इधर इफेक्ट क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, यानी कि वो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है ना, वो कम होनी जानी चाहिए ना. जितना अपोजिशन कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन की मोशन आराम से हो जाएगी. सो इन फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर रिड्यूसेस द पोटेंशियल बैरियर. इसलिए क्या हो जाते हैं, इनकी वैल्यू 0.3 0.43, ऑटोमेटिक विड्थ रिड्यूस होने के बाद बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो सिलिकॉन लिया तो बैरियर पोटेंशियल अनबायस मोड में 0.3 नहीं तो 0.4 है, लेकिन अगर हम लोगों ने अप्लाई किया तो ये वाला हम लोग कम कर सकते हैं. सो इन फॉरवर्ड बायस depletion layer width as well as barrier potential decreases. Current passes through junction and it is called in forward biased mode. In reverse biased mode, electrons are drawn away. Similarly, holes are drawn away from the depletion layer. So width of depletion layer increases. Value of its own barrier potential also increases, and diode or junction is called in reverse bias mode. It does not conduct at all. So P to positive forward bias, P to negative reverse bias. Forward bias decrease in depletion layer width, decrease in barrier potential. In reverse bias, increase in depletion layer width and increase in value of its own barrier potential. In forward bias, it behaves as closed switch. ये जो switches रहते हैं ना दिए के, ये वाले on off करते हैं ना, instead of such switches, we will use electronic switches. So diode can be used as one-way switch. When kept forward biased, closed switch on a button. When kept reverse biased, open switch. तो ये बटन क्या है, ऑफ है. So one of the most important use of PN junction is electronic switch. So tomorrow we'll proceed further to study its use as electronic switch. So today I am closing the meet.